In today's session, I will like to cover one of very important topic of finance, that is shares. Shares we generally listen in our day-to-day life, that is the thing or the part in the whole. Means share means what? Share means a part from the whole. पूरे में से अगर किसी एक टुकड़े को निकाल दे, that is known as share of that big one. बड़े का छोटा सा एक टुकड़ा, that is share. But in today's session, I will cover all the things that is related with share, those shares that belongs to share market. शेयर मार्केट में शेयर्स किसे कहते हैं, या फिर अगर हम कहीं सुनते हैं कि किसी भी टाटा के शेयर्स, बिरला के शेयर्स, then what is the meaning of that share? Who will decide the amount of share, how the share is being distributed among the public, who is actually the owner of the shares, and how the share came into existence. We will discuss in today's session all the things. So please watch till end to be very clear about the term shares. Before going on shares, first of all, we must know how the share came into existence. Share कैसे आया, ये शेयर वर्ड कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया यूज करना, ये शेयर का मनी से क्या रिलेशन है. So before going on shares, first of all, we must know what is money. Money is an officially issued legal tender that typically consists of notes and coins. Money is the circulating medium of exchange as defined by a government. Money is what? Money is an officially issued note or coins. Money किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हुई नोट्स और कॉइन्स हैं. That those notes and coins may create a right for the people who is holding that note or coins and may use those note or coins for their requirements or for meeting out their requirements. Generally money हम क्या किसे कहते हैं? मनी एक ऐसी यूनिट है जो कि गवर्नमेंट ने ऑथोराइज की है. देयर इज नो नीड कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट होगी. हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली मनी को ऑथराइज करती है. एंड दोस मनी बिकम अ लीगल एंटिटी. जो भी ओनर होते हैं उस मनी के, मीन्स द पर्सन हु इज हैविंग the amount of notes or coins may have legal right to use all those notes and coins according to their requirements. Now, what are the requirements or why the money become the legal entity? क्योंकि मनी एक ऐसी यूनिट है जिससे हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मनी को लीगलाइज किया हुआ है. ओनली गवर्नमेंट हैज द राइट टू इशू मनी. All the person who holds the particular amount of money has the right to use their money according to their needs. Let us suppose we have 100 rupees, 200 rupees, 500 rupees. We have the right of those amount of money, and we can use that money in any way, whatever we want. So we can use that money according to our needs, our requirements. Means no one can force us to use the particular money in the same manner. Even government can also never say you can use the money as the government said to you. The government has given only the right for that money, and we use the money according to our requirements or according to our wish. So money is an entity, money is a unit which is circulating, which is moving from one public to another public. According to the need of one public, it may transfer to another public. So once the money is transferred, the same money is converted into shares. We will discuss how the money is converted into shares later on. First of all, the term money is very much clear to everyone. Now, money, who required that money, or what is the basic need? Who all needs money? Money is basic need for we people also and for company also. We people, general public like you and me, हम आप दोनों के लिए मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है. For our every requirement we require money.
मनी ऐसी यूनिट, ऐसी एंटिटी है जिससे हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को इजीली, आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। तो मनी हमारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। मनी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपनी सारी फर्दर रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। सो मनी इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स आर derived फ्रॉम मनी। मनी may help us to meet out all the derived requirements of we people. In the same way, company also needs money. Money company needs to meet out their requirement. Like we people, we meet our requirement, company meet their requirement, and all those requirements are also fulfilled by the money. So before going, we must know what is company. Company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual existence, succession and a common seal. मनी क्या होती है? मनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। Who has created this money? Law has created. Law has created company. Law has created company as an artificial person. Means the company is not like you, me, a living person. Company is what? Company is an artificial person, but the company also behave like human, behave like person. Company has its separate entity. Company's entity or the company's succession can never mix up with the owner's succession. Company has perpetual succession, means it may be possible that the owner of the company or the owner of the company may leave the organization or may die, but the company may go on. The company may run continuously. Company has a common seal, a seal that is common for whole the company, and all the transactions of the company is being authorized and is being legalized with the help of that common seal, and that common seal make a company a legal entity and make separate from their owner. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ ने क्रिएट किया होता है, और लॉ ने ये बताया है कि कंपनी एक ऐसी पर्सन है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम देयर ओनर्स. कंपनी आर डिफरेंट. कंपनी आर, वी कैन नॉट मिक्स द ओनर ऑफ द कंपनी टू द कंपनी. कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर ओनर. कंपनी हैज a separate entity. Company has a separate seal, and all the activities of the companies may pass through under that common seal. अब कंपनी हमें समझ में आ गई. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. अगर हम आप अगर कंपनी होते तो हम लोग क्या करते? हम अपने पैसे लगा के अपनी कंपनी को चला लेते. बट कंपनी इज व्हाट? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी ओनर से अलग होती है, इसलिए सिर्फ ओनर ही अपने पूरे पैसे कंपनी को चलाने में नहीं लगाता. तो कंपनी कहां से अपने फंड्स लाएगी, और फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेस आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम वेयर द कंपनी कैन कलेक्ट फंड for meeting out their basic requirements. The company can collect fund from their owners. Owners means the person who plans to start the business. Let us suppose Mr. A, B, C wants to start a business XYZ. Means A, B, C तीन owners हैं, तीनों मिलकर के एक XYZ कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं. So it may be possible कि कुछ amount of fund ABC ने अपना लगा दिया, या ABC ने ये कहा कि yes, this much or 20%, 30% of company's required fund will be contributed by B as a owner. May be possible ABC ने ये कहा कि हम ओनर से कंपनी के 30% of total required fund we will give to the, या we will contribute to in the company. Later on, it may be possible the owner may collect some amount of fund from their family or friends. It may be possible कि Mr. A, Mr. B and Mr. C कुछ amount of fund अपने family या अपने friends के थ्रू भी collect कर सकते हैं. और क्या रास्ते हैं कंपनी के फंड्स के कलेक्शन के? कंपनी में take loan from the bank as well as from lenders. Company may take loan, take fund from banks or from lenders to meet out the company's fund requirement. Or the fourth option in front of company is general public. The company may collect fund from general public. General public means you and me. हम दोनों से कंपनी चाहेगी कि हम फंड्स कलेक्ट करें, तो क्या हम कंपनी को इसी तरीके से पैसे दे देंगे? नहीं.
we as a general public want some kind of security. हम किसी को भी इस तरीके से अपने पैसे नहीं दे सकते हैं. जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं उन फंड्स को हम इस तरीके से किसी को भी कभी नहीं देंगे. So there is a legal transaction between company and we people. उस लीगल ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं? उसी ट्रांजेक्शन्स को हम कन्वर्ट करते हैं शेयर के टर्म में. अब कंपनी को अगर अपने लिए फंड्स कलेक्ट करना है एंड द कंपनी वांट्स टू कलेक्ट some of the part of their fund from general public, then what the company can do? Company can issue share in the market. कंपनी क्या करेगी? कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करेगी. क्योंकि कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी को जो शेयर का पार्ट इशू करना है, शेयर मीन्स व्हाट? कंपनी कह रही है कि जनरल पब्लिक आप मुझे पैसे दीजिए, उन पैसों के बिहाफ में हम आपको अपने कंपनी में शेयर देंगे, हिस्सा देंगे. मतलब we people become the part of that company. हम लोग क्या बन गए? हम लोग उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए. We become shareholder of the company. हम हिस्सेदार बन गए. Then we can easily share our funds to the company. हमको अगर कंपनी ये ऑफर देगी कि आप अपने फंड्स दे दीजिए, हम आपको कंपनी में हिस्सा देंगे, देन ओनली वी कैन गिव आवर फंड्स टू कंपनी. तभी हम अपने फंड्स को कंपनी को देने के लिए रेडी हो जाते हैं. अब कंपनी ने शेयर इशू किया या शेयर मार्केट में लाया तो शेयर हम कहते किसको हैं? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर क्या होता है? शेयर एक हिस्सा होता है. शेयर इज अ पार्ट. किसका पार्ट है वो? शेयर कैपिटल. कंपनी का जो कैपिटल है उसका शेयर इज व्हाट? शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट शेयर बन जाती है और हम क्या बन जाते हैं? हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि वी हैव होल्ड दैट अमाउंट ऑफ शेयर. इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी measured for the purpose of liability and dividend. ये क्या रिप्रेजेंट करता है शेयर? इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. क्योंकि हम कंपनी के शेयर्स को ले लिए, कंपनी ने हमें अपने शेयर कैपिटल का पार्ट बना लिया हमारे फंड्स को, तो हम क्या बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है शेयर? कि वी हैव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी. वी हैव इंटरेस्ट. कंपनी की जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, उसमें हमारा इंटरेस्ट होगा. वी हैव कंप्लीट इंटरेस्ट इन नोइंग कि कंपनी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी हमारी ग्रोथ कर रही है, जिस कंपनी में हमने पैसे लगाए वो कंपनी हमारी लॉस में जा रही है, या कंपनी किस तरीके की एक्टिविटी में अभी रन कर रही है. तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीजें हमारा कितना पोर्शन शेयर का होल्ड किया हुआ है हमने, ये डिसाइड करते हैं. मतलब किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में हमने कितने शेयर्स को होल्ड करके रखा है, ये डिसाइड करेगा कि हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव इन दैट कंपनी. एंड दिस में आल्सो डिवाइड आवर डिविडेंड रेशियो एज वेल एज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स अस. कंपनी की हमारे लिए क्या लायबिलिटी है और हमारा कितना परसेंट ऑफ डिविडेंड कंपनी ईच ईयर हमको देगी, ये सारी चीजें इन शेयर्स और हाउ मच अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, दिस विल डिसाइड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स? मतलब हम किस तरीके से किस टाइप के शेयर्स को मार्केट में परचेज कर सकते हैं. We have so many types of shares and according to that we have an option to select. First one is promoters shares. Promoter shares are the shares who is being taken by the promoters of the company. हमने example में लिया था Mr. A, Mr. B and Mr. C. These three persons are the promoters of company XYZ. So the shares taken by all these three persons are came under promoters share and they have a different right in the company. Now next one is ordinary share. Ordinary share, we can also say that equity share. Ordinary shares are the shares or the person who holds the ordinary shares are the shareholders
who have equity right on the company, means who are also considered as owners of the company and may take their dividend after payment of interest as well as preference shareholders. Means they ordinary shareholders are also considered as a owner of the company and they will take their share of dividend after payment of all the interest and the preference shareholders dividend. Now next one is preference shares. Preference shares are the shares that is issued in the public and the person is having the holders who is having preference shares have preferential right in taking dividend, means they are the person who will take their dividend first. Their rate of dividends is already determined or fixed. We have so many types of preference shares like redeemable and irredeemable preference shares. Redeemable preference share means the shareholders may contribute their fund in the company for the fixed period of time. After completion of that period, the company may return the amount to the person as well as the dividend. Irredeemable preference shares are those shares which may go on with the company's life, means वो shares जो कि कंपनी के साथ कंटिन्यूअसली चलते हैं और जो कि कभी भी रिडीम नहीं होते, मीन्स रीपेमेंट कंपनी नहीं करती है, जिनके सिर्फ एवरी ईयर कंपनीज क्या देती है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती रहती है, बट वो शेयर्स के फुल कंप्लीट पैसे जो कंपनी ने जो पर्सन ने कंपनी में कंट्रीब्यूट किए हैं वो कभी भी नहीं देती है. इन द सेम वे cumulative and non-cumulative shares. Cumulative shares are those shares which may accumulate, which may continuously accumulate, means which may add on, and non-cumulative shareholders are those shareholders which may not be accumulate, not be add on the basis of passes of time. Next one is convertible and non-convertible. Convertible shares are those shares which may be converted after some period of time. It may be possible the share may be converted into ordinary shares or equity shares. Those shares are called convertible shareholders. Means after passes of time, after some fixed period of time, the preference share may convert into equity share are known as convertible preference shares. Non-convertible preference shares are those shares which may not be converted throughout the duration fixed by person and the company. Means वो shares जो कि कभी भी कन्वर्ट नहीं किए जा सकते या जो सेम एग्जिस्टेंस के साथ लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो दे मे रिडीम इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. Then next one is participatory and non-participatory preference shares. Those preference shareholders who have the right to participate in business decisions are considered in participatory shares or participatory shareholders, and non-participatory shareholders are those shareholders who have no right to participate in any kind of business decisions are came under non-participatory shareholders. Now, the types of shares, types of preference shares, types of shares, all the things are totally clear. We will have some more things or some more common terms that is being used with the term share. We will discuss all those things one by one. We have some of the important terms that is being linked up with shares. First one is underwriting agreements. The commission not exceeding 2.5% of the value of shares and not exceeding 5% in case of debentures will be paid to person agreeing to subscribe or procure subscription for shares or debentures. Means the person and the company, the person who wants to invest their funds in shares and the company
who wants to take funds from the public may go under some underwritten agreements. The agreements include the shareholder will get only 2.5% of the value of shares as a commission, and the debenture holder will get 5% of the value of their debenture. Means वो शेयर होल्डर जिन्होंने जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के लिए, उनका जो कमीशन होगा वो कमीशन 2.5% ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा नहीं होगा। और वहीं अगर किसी भी पर्सन ने एज अ डिबेंचर होल्डर कंपनी में फंड्स को कंट्रीब्यूट किया है तो वो 5% से ज्यादा कमीशन रिसीव नहीं कर सकते। दिस इज एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट अमंग बिटवीन द company and the person who is going to contribute their fund in the company's share capital. Now, next one is issue of share at a premium. There is some conditions where the company may issue share at a premium rate. Means, let us suppose the share value of a company is rupees 10 per share. A company is going to issue the share at the market at rupees 12. The 2 rupees increase value is known as issue of share at a premium. The company has right to issue their shares at a premium rate also. Issue of share at discount. Issue of share below par value or face value is known as issue of share at a discount rate. If the value of share is rupees 10 and the company is going to issue this 10 rupees share at rupees 8, then this 2 rupees gap 10 to 8 is known as issue of share in discount. Now, sweet equity shares issued to a class of employees for providing know-how or making available a right in the nature of intellectual property or value addition. स्वीट इक्विटी शेयर्स एक तरीके के शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इशू करती है। क्यों करती है? क्योंकि एम्प्लॉयज ने कंपनी को कोई अलग टेक्निक, कोई अलग अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दी है जिसके कारण कंपनी में स्टार्ट गेनिंग, जिससे कि कंपनी को कुछ एडिशनल फायदे, एडिशनल बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स। दोज शेयर्स आर ओनली इशूड बाय अ कंपनी टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी for providing exceptional intellectual know-how to the company. Buyback of share or safety net. A company can buy its own shares or securities. Means company can buy from the market their own shares or securities because the company may avoid paying funds in the form of dividend or interest to external party. The company can buy back their share by their own. But the maximum permissible limit is only 25%. Means a company can buy back their shares only at 25% of total shares issued in the market. सिर्फ वो 25% ही अपने total issued share का buyback कर सकती है. Now, at the end, I would like to say that in this whole session, we will cover how shares, how the money is converted into shares, and how a company can collect shares from the market or funds from the market by issuing shares. We have two options, preference share and equity share. Means the general public can issue either in the form of preference share or in the form of equity shareholders as and when it is being allowed by the company. If you have any doubt, any confusion, any queries regarding this topic, please write the same in comment. Thank you.